Hello, students. Um, can everybody hear me on a scale of 5? Affirm, sir. Affirm, sir. Radio 5. Radio 5. Okay, where is Nakul? Okay, Shablish, do you have any questions or doubts? कैसे चल रही है प्रेपरेशन और दिन में कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई का? प्लीज अपडेट मी. So 4 to 5 hours, but एक साथ नहीं, थोड़ा ब्रेक लेके एंड जो डाउट है Can I see you? इस Okay. We have a quick agenda for today. Oh, where is Nakul? Shweta and Sahil, any questions? नेगेटिव Okay. Negative, sir. श्वेता, आपने स्टडी स्केड्यूल नहीं भेजा मुझे. सर कल 2 to 3 hours आई नहीं, बट वेंट मुझे प्रपोज्ड स्टडी स्केड्यूल चाहिए. ओके सर आई विल सेंड इट आगे क्या फॉलो करने वाले हैं हम लोग आज कल में, वो चाहिए हमें. समझ रहे हो? यस अभी भेजो, चलो अभी भेजो मुझे. शबरीश, अपना स्टडी स्केड्यूल भेजो मुझे. क्या चल रहा है वो भेजो. सुबह से शाम तक कितने बजे से कितने बजे पढ़ रहे हो? ओके. सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक वाइवा प्रैक्टिस फॉर पार्ट 2 क्वेश्चंस. Zahil, you have to focus on accuracy. Okay, you have to perform really well and you have to focus and perform really well. Okay. ट्रिक्स दे रहा हूँ श्वेता एंड शबरीश, आपको भी ट्रिक्स दे रहा हूँ. ट्रिक्स ये हैं कि क्वेश्चन जब पूछा जाए आपको, तो थिंक अबाउट द क्वेश्चन and let the question roam in your mind for 2 to 5 seconds. Acknowledge the question asked. Let's say if they ask you what is frequency, let's say sir frequency. ऐसे acknowledge करके, frequency generally is a term. तो generally words and all तो हम नहीं use करते, but this is how we buy time. So frequency, let it come to you. Till the time it doesn't come to you, don't answer. So मुझे दिख रहा है cycles per second, frequency, wavelength, speed of light, frequency table, depending upon frequency, different applications, propagation, and then frequency modulation. सब याद आ गया. कितना 5 से 10 सेकंड लगा मुझे. तो इसमें मैं मेरा आंसर मैंने पढ़ा है, अपने आप बन जाएगा आंसर जो पढ़ा है उसी में. सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. It is associated with EM wave. EM wave is an electromagnetic wave, also called as a radio wave. EM waves are electromagnetic in nature. They have two components, electric and magnetic. They are sinusoidal in nature. They are sine waves, starting from 0, 90, 180, 270, 360, completing one cycle. So number of cycles per second is frequency and the unit is hertz. ये लेवल पे आंसर देने हैं हमें. इस लेवल पे आप आंसर दोगे, ट्रस्ट मी, पार्ट 2 या दुनिया का कोई भी वाइवा इजीली क्लियर हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर एक्यूरेट विथ योर इन्फॉर्मेशन. गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो कोई मतलब नहीं है. श्वेता एंड शबरीश, आर यू फॉलोइंग? अफर्म सर पार्ट 2 के लिए बोल रहा हूँ मैं. सो प्रैक्टिस दिस व्हेन यू आर गिविंग योर आंसर्स टू मी टुडे. प्रैक्टिस दिस एबिलिटी. तुम्हें आता है नहीं आता है, तुम खुद से कैसे देते हो उसकी बात नहीं हो रही है. थोड़ा सा ये भी ट्राई करो इस तरीके से भी आंसर देने का. कैन आई गेट एन एक्नॉलेजमेंट? अफर्म सर Affirm, sir. Understood. 'Affirm, sir. 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 'Aff
Okay, so let's get started. We're going to start with Sahil. Close your books, everyone. No open book. Okay, so Sahil, tell us something about yourself. So very good afternoon. Thank you for having me here. Sorry, To read you too. Say again. suggest how do you read, sir? Read you three. Please tell me. Okay, Sahil, are you there? Affirm, sir. How do you read? Read you five. How do you read? Radio 5, strength 5. Okay, fine. Okay. Um, please answer the question. Please tell us something about yourself. So my name is Sahil Jha. I am 19 years old. I was born in Jharkhand and I have been brought up in Virar. Ever since as a child, I was always mesmerized by the fact that how these heavy aircrafts can fly seamlessly. So after completing my 10th grade, I decided to make a career as a pilot. After completing my 12th grade in science stream, I began my training in aviation. Till now, I have cleared my regulations, navigation, and meteorology papers. And RTR license is the last goal that I wish to achieve before beginning with my flight training. Most of the time in my day is spent for my training in aviation. But in my free time, I also like to play chess, listen to music, and go for occasional runs. Okay. Um, Sahil, what are the types of communication systems used? So there are two types of communication systems used. The first is the HF or high frequency communication systems, and the second is VHF or very high frequency communication systems. The HF band is from 3 to 30 megahertz, and VHF band is from 30 to 300 megahertz. The systems on board the aircraft for HF communications use a frequency between 2 to 28 megahertz, and the systems that for VHF communications use frequency between 118 to 135 decimal 975 megahertz. HF is generally used for long range communication, especially over oceanic routes, while VHF is used for short range communications ranging from 200 to 250 nautical miles. Okay, what is the separation between VHF frequencies? Sir, initially the separation between VHF frequencies was used was 25 kilohertz, but now a spacing of 8.33 kilohertz is used. Okay. What do you mean by NX15? Sir, ICAO Annexure 15 is for Aeronautical Information Services. It contains all standards and recommended practices that has to be followed by pilots and air traffic control units for the distribution of aeronautical information. It uses different elements like aeronautical information publication along with its amendments and supplements, aeronautical information circulars, notice to airmen, that is also called as NOTAMs, a checklist of valid NOTAMs, and pre-flight
information bulletins. What do you mean by ADIZ? So ADIZ, which is also called as ADs, stands for Air Defense Identification Zone. It is an airspace over ground or water where the identification and control of any civil aircraft is very important for national security. The ADs can also expand beyond the country's territory up to a certain limit so that the country gets some time to react to an hostile aircraft. The ADs is not mentioned in That's any okay. international. What do you mean by AAI? So ASI's or Airport Authority of India was formed in 1995 by merging of International Airport Authority and National Airport Authority. It is a regulatory body under the Ministry of Civil Aviation Government of India that regulates and focuses on expansion of various airport terminals across the country. It also makes Okay. sure that Okay. Pulse. Stand by. standing by.
Okay, students, how do you read? Sahil, are you there? 85. Yeah. Everybody, cameras on. So, Sahil, what is ELT? Sir, ELT stands for Emergency Locator Transmitter, which is an equipment on board the aircraft that transmits the aircraft's location on various frequencies in a case of accident. The frequencies on which the ELT operate is 121.5 megahertz, 243 megahertz, and 406 megahertz. Are you The sure ELT is automatic. are you sure it is also transmitting on 243 megahertz? Okay, which annexure has ELT? Sir, ICAO Annexure 10 has emergency locator transmitters. What are the types of ELT? Sir, the first type of ELT is automatic fixed ELT. This ELT is rigidly attached to the aircraft and Okay, it is fine. What are the sections of CR? so CAR is civil aviation requirements that are laid down by Directorate General of Civil Aviation. The Rule 133 Alpha of Indian Aircraft Rule 1937 empowers DGCA to amend the civil aviation requirements and issue them. There are total 11 sections for civil aviation requirements, which are further divided into series alphabetically, and those series are further divided into parts which are named numerically. Yeah, so what are the sections of CR? So to name a few, the section 1 is for, sir, I cannot remember the names of the section, but I remember section 7 is for flight crew standards and licensing. Okay. What do you mean by RADRA? RDARA. So RDARA stands for Regional Domestic Air Route Areas. India is divided into 5 overlapping contours for regional domestic air route areas Okay, what are Q into codes? northern. So Q codes are the subscale settings for which we can put into the datum of altimeter, and altimeter then gives the vertical position of the aircraft regarding to that specified datum. For example, QNE is a Q code for standard setting of 1013.25 hectopascals or 29.92 inches of What is the mercury difference that when between, set on the altimeter. that's fine. What is the difference between transition altitude and transition layer? Transition level. The Difference transition between altitude transition is altitude and transition level. affirmation. So transition altitude is the highest altitude below which the aircraft will always fly on the local QNH, and its height will always be referenced to altitude in feet. And transition level is the lowest flight level above which the aircraft will always fly on a standard setting of 1013.25 hectopascals or 29.92 inches of mercury, and its height is leveled correction, and its height is referenced to as flight level. Flight level 0 will be referenced to where the pressure is 1013.25 hectopascals. What do you mean by polarization? So to explain polarization, I would like to begin with electromagnetic waves. So electromagnetic waves are made up of two components. First is the electrical component and second is the magnetic component, which are mutually perpendicular to each other. So polarization is the orientation of the electrical component in the EM wave. That is, if the electrical component is vertically oriented, then the wave is vertically polarized. And if the electrical component is horizontally oriented, then the EM wave is horizontally polarized.
To receive the maximum intelligence, the antenna or the aerial should be in the same orientation, same polarization as of the wave. What do you how does VHF propagate? So VHF, that is very high frequency, propagates through line of sight and space waves. Okay. Uh, what about HF? How do HF propagate? So HF, that is high frequency, propagates through sky waves, that is ionospheric propagation, but it can also propagate as surface waves as well. What is what do we do with HF frequencies during daytime and nighttime? Is it the same or is it different? Negative, sir. The frequencies for HF is not same. Uh, as a general rule, the frequency for HF which is used at night is almost half the frequency that is used during the day. What are different type of radio navigation systems used? So radio navigation systems that are used are VOR, that is very high frequency omnidirectional range. Then we have NDB, that is non-directional beacon. ADF, automatic direction finder. DME, distance measuring equipment. IS, that is instrument landing system. Okay. Do you know the principle for systems? Can you explain the principle used in VOR? Affirm, sir. Uh, VOR, or a very high frequency omnidirectional range, provides aircraft with magnetic bearing by using the principle of phase difference between the variable frequency and the reference wave. The variable wave and reference wave is emitted by VOR, and by calculating the phase difference, the magnetic bearing from the station is provided to the aircraft, and the aircraft use this magnetic bearings for different purposes like en route navigation, let down procedures, and homing to a particular station. What's the principle for VOR? The principle of VOR is phase comparison between variable frequency and reference, that it a phase comparison between variable wave and reference wave to provide magnetic bearings to the aircraft. What is the difference between incident and accident? So incident is an event in which the aircraft structures have been severely damaged or there is any person that is fatally injured when or the aircraft is not located at the end of the investigation. When we talk about being fatally injured, and it means that the person injured during the event was declared dead within 7 days of the event, while incident are the events that are not qualified as accidents. What are the components of ILS system? So ILS, that is Instrument Landing System, provides lateral and vertical guidance to landing aircrafts. It has three components. The first is the localizer, the second has a glide slope, and the third is the marker beacons. What are the The colors local for marker beacon? So for outer marker, the color is blue. For middle marker, the color is amber, and for inner marker, the color is white. What are the SCOC codes for unlawful interference?
Sir, the SCOP code for unlawful interference is 7500. And for hijack? So it's the same 7500. And for RCF? So for RCF, the SCOP code is 7600. What do you mean by runway incursion and excursion? So runway incursion means if any uh, FOD occurs on the runway during the operation of the aircraft that possesses as a potential threat to the aircraft, then it is called as runway incursions. And excursion? Sir, I'm not sure about runway excursions. Okay, what do you mean by antenna? The antenna is a device that is used to transmit and receive radio waves. In a transmitter, the antenna is the last component, and in a receiver, the antenna is the first component. There are two types of antenna that are widely used. The first is the dipole, and the second is the Marconi, which is also quarter wave antenna. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, Shabrisha Shweta, how was this performance? Very good, sir. He explained everything in a detailed manner. Shweta? Wherever he needed time, he took the breaks with using some of the other fillers, which were not understood, and he covered the whole Viva very nicely. Okay, how was your performance, Sahil? So performance was decent. Like improvement अभी भी हो सकता है. Like ठीक था sir. कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट जिनका आंसर नहीं पता था? सर वो रनवे एक्सकर्जन्स और इंकर्जन्स के बारे में मैं सुबह ही पढ़ रहा था और वो इंकर्जन्स पढ़ा था, वो एक्सकर्जन्स ही बाकी रह गया सर, वही आया तो. और दूसरा वो सर वीओआर में वो थोड़ा ये हो गया. याद रखना प्रिंसिपल में हमें हमेशा पर्पस भी मेंशन कर देना है. डायरेक्शन बेरिंग मिलता है, हमें डायरेक्शन रेफरेंस मिलता है. तो एडीएफ में रिलेटिव बेरिंग थ्रू स्विच्ड कार्डियोइड्स, दो पोलर डायग्राम्स फॉर सेंस एंटीना एंड लूप एंटीना स्विच होते हैं टू मिनिमाइज द डायरेक्शनल एम्बिग्युइटी. वीओआर में फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स टू ऑब्टेन रेडियल, रेडियल भी मेंशन कर दो वहां पे, मैग्नेटिक बेरिंग फ्रॉम द स्टेशन. एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे वहां पे. वर्बैटिम प्रिंसिपल बाय हार्ट कर लो सारे प्लीज. उसमें कीवर्ड से इजी हो जाएगा. फेस कंपैरिजन, स्विच कार्डियोइड्स, वेरिएबल सिग्नल्स. कीवर्ड्स गलत नहीं बोलने, वहां आप थोड़े फंबल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हाँ है. सर. इंसिडेंट एक्सीडेंट कहाँ पढ़ा है आपने? सर वो एयर रेगुलेशंस में ही पढ़ा था इंसिडेंट. आपको टाइम मिलेगा मुझे डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट निकाल के देने के लिए? हाँ सर अभी भेज. हाँ. रनवे इंकर्जन एक्सकर्जन भी देखो कहाँ मिलेगा आप लोग को डेफिनेशन. कहाँ चेक करोगे? रेगुलेशंस में चेक करो या फिर स्काइब्रेरी में चेक करो. रेगुलेशंस की ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो. रेडियो टेलीफोनी के डेफिनेशंस में चेक कर सकते हो जो रूल्स ऑफ द एयर में है. हाँ. ओवरऑल अच्छा किया आपने. सीआर सेक्शंस याद नहीं थे, दैट इज़ वेरी बैड. सिली मिस्टेक. आज याद कर लो सेक्शन सारे. हाँ सर. रिडारा का एम्फोसिस डोमेस्टिक एंड फुल फॉर्म पे. अभी एक और चीज़ सीख लो कि कभी कभी है ना, अगर कोई आदमी थोड़ा सा बिजी रहता है, वाइवा लेने वाला या एग्जामिनर, तो उनको इजी होगा आपकी बात समझने विद द यूज ऑफ कीवर्ड्स, एम्फसाइजिंग मोर ऑन कीवर्ड्स. ओके. तो आर डी ए आर ए स्टैंड फॉर रीजनल एंड डोमेस्टिक एयर रूटिंग एरियाज. तो ऐसे थोड़ा मैं फोर्स करके एम्फसाइज करके बोलूँ ना तो ज़्यादा समझ में आता है. अब बीच में गैप आ गया, बीच में एग्जामिनर ने 5 मिनट पॉज करा दिया, फिर क्वेश्चन पूछे, ह्यूमन एरर, सो इट शुड नॉट प्ले विद अस.
क्यू कोड्स में भी एम्फेसिस कम था. Q codes deal with altimeter setting and not just altimeter setting. You should say that Q codes are generic Q codes starting with Q for almost n number of, for a lot of information. In aviation, in practice, we generally see a lot of Q codes for altimeter subscale setting for proper accurate vertical altitude references. तो थोड़ा कीवर्ड और स्पेसिफाई कर सकते हो. VHF HF प्रोपोगेशन में एक दो पॉइंट्स और डाल सकते हो खुद से. टाइप्स ऑफ आयरन सिस्टम्स में पर्पस के हिसाब से सिस्टम्स का नाम लेना है आपको. तो फॉर नेविगेशन ऑन रूट एंड टर्मिनल एडीएफ है, वीओआर है, जीपीएस है. फॉर लैंडिंग एमएलएस एंड आईएलएस है. ऑल्टीट्यूड के लिए रेडियो ऑल्टीमीटर है, वगैरह वगैरह, वेदर के लिए. ठीक है, बाकी अच्छा था सब कुछ. एंटीना का लास्ट में क्या बोला समझ में नहीं आया. एंटीना स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन नोट्स ऑन इट. पढ़ लेना, नहीं तो मैं शेयर करूंगा. बट एंटीना जनरली इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरियल. फॉर अ ट्रांसमीटर, एंटीना इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसमीटर फ्रॉम वेयर द, जेनेरिक वे में बोल दोगे आपकी ईएम वेव इज रेडिएटेड इनटू द स्पेस, and as per the polarization it can also be received also. We need a transmitting antenna and a receiving antenna. An antenna is nothing but a conductor. It's a conductor. एंटीना में टाइप्स होते हैं, यूनिपोल, डायपोल, बस. तो एक एंटीना को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने के लिए कुछ लॉज अबाइड करने पड़ता है. दैट्स ऑल अबाउट एरियल्स एंड एंटीनाज. तो जेनेरिक वे में भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, स्पेसिफिक भी कर सकते हो. नेक्स्ट तुम्हारा एक और वाइवा लेंगे हम पार्ट टू का. अ, उसमें मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और वो कल करने वाला हूँ. इज दैट ओके? फॉर्म सर। कल सैटरडे है. हाँ सर, please। या तो एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नहीं मिले हैं, जो करने बाकी हैं, वो सबके ऊपर आप तैयारी कर लोगे आज. और जो जो नहीं सॉल्यूशंस मिली है या मुझे आपको देनी है, मुझे आज याद दिला देना आप कि सर ये मेरा आप कब भेज रहे हो या आप भेज रहे हो कि मैं देखूं. ऐसे पूछ लेना एक. पार्ट टू पे आप लोग एक्स्ट्रा फोकस दो. शबरीश आपने देखा है, श्वेता आपने देखा है. प्लीज आप लोग को भी अच्छे से करना है. वरी नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. श्वेता, मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमसे एरर हो सकते हैं हमारे प्रेपरेशन में. जैसे मैंने कल बोला आप स्केड्यूल भेजो, आपने नहीं भेजा, तो हम शायद सिंक में नहीं हैं. तो उस चक्कर में शायद हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं बट काम वैसे नहीं होगा जैसे हम चाहते हैं काम होना हमारा. तो प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड डू एज टोल्ड. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग, देन डिस्क्राइब विथ मी, डिस्कस विथ मी. ओके. Yes, sir. श्रद्धा एंड शबरीश, आर यू फेसिंग एनी challenges? So Negative, sir. yes, no sir. ठीक है. शबरीश, कंटिन्यू विथ योर प्रेप. आजकल परसों में तुम्हारे भी प्रैक्टिस एग्जाम्स होने हैं. श्रद्धा, आपके भी होने हैं, सबके होने हैं. um, या फाइन. पार्ट वन की चिंता मत करो. साहिल, पार्ट टू पे फोकस दो. पार्ट वन का जो प्रेप कर रहे हो वैसे करो. कुछ डाउट्स रहेंगे तो डिस्कस करो. एंड पार्ट वन के लिए तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कब प्रैक्टिस मॉक चाहिए मुझे वो भी बता के रखो. एक तो कर ही लेंगे, और नहीं करना है तो नहीं, एक तो कर ही लेंगे कम से कम. एक से ज़्यादा चाहिए तो मुझे बता के रखो, वैसे स्केड्यूल करके रखता हूँ. मैं चाहता हूँ सर एग्ज़ाम के एक या दो दिन पहले, तो ट्यूसडे तक आप फ्री हो जाओ. ट्यूसडे तक आपको मेरे मतलब ऑन योर ओन, ट्यूसडे वेनेसडे, ताकि थर्सडे को आप फ्रेश एग्जाम दे सको. सर वेडनेसडे को एग्जाम। वेनेसडे, थर्सडे. 16th को है सर। या वाज चेकिंग. या हाँ वेनेसडे. सर, वेडनेसडे। हाँ, सो 12 तो मंडे ट्यूसडे यू शुड बी फ्री आइडियली. या मे बी मंडे सुबह सुबह या आफ्टरनून तक पढ़ लिया, ट्यूसडे यू शुड बी फ्री कंप्लीटली. ठीक है. तो पार्ट टू पे ठीक। प्लीज देखो और क्या बचा है क्या नहीं बचा है. इलेक्ट्रिकल का आई नो हो जाएगा. मेक श्योर आप मुझे याद दिलाते रहो स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा. शबरीश, इलेक्ट्रिकल का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. और शबरीश, पार्ट टू के क्या क्या क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हुए हैं जो आपने चैट में शेयर किए थे प्रीवियसली, वो प्लीज़ दोबारा से शेयर कर दो मेरे साथ. जो भी बचे हैं, जो भी डाउट्स या पार्ट टू के क्वेश्चंस एंड ऑल. ठीक है. साहिल, गुड जॉब. नो कंप्लेन्स. छोटे मोटे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ध्यान दो.
नेक्स्ट पार्ट टू वाइवा इज नॉट गोइंग टू हैव दीज क्वेश्चंस। इन्होंने ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी पूछेंगे और थोड़े बेसिक्स भी पूछेंगे। ठीक है। लॉजिक। श्वेता एंड शबरीश, आपके भी पार्ट टू वाइवा होंगे। एक दिन हम ऐसा वाइवा लेंगे कि तीनों का साथ में लेंगे, ऐसा 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 ऐसा। ऑल क्वेश्चंस गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव एंड फन। अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, और मुझे डेली हर 2-3 घंटे में अपडेट्स देते रहो। दिमाग में सिर्फ आर्ट ही रहना चाहिए। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल। ये ही टाइम है जहां हम अचीव कर सकते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हम। सो हम एज अ स्टूडेंट कभी अलग माइंडसेट में रहते हैं, कभी अलग माइंडसेट पे रहते हैं, कुछ ना कुछ। अभी एक ही माइंडसेट पे रहना है। आई एम गोइंग टू क्लियर, एंड मुझे बस पढ़ना है और खुद को बेहतर बनाना है। बस 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। पास फेल सेकेंडरी होता है, एविएशन में कुछ फेल नहीं होता। ओके, चलो ठीक है। गुड जॉब साहिल। Prepare, continue with your prep. A more difficult part to Viva, and of course a final part one mock. Anytime as a surprise can be asked. तब तक तुम्हें और कुछ भी चाहिए रहेगा मुझे मैसेज करना। Shweta and Shabrish, do you have any questions or doubts? Sahil, do you have any questions or doubts? कोई नेगेटिव सर। challenges? Negative sir as of now. चलो ठीक है। Sir, if I'm asked about, tell me about yourself. Am I supposed to talk about the AME part also? Can I discuss about? या ऑनेस्टली, So same for me, right? या अपन ने तो शबरीश कितने बार बात की है इस बात पे। सर पर तो उस एरिया से क्वेश्चंस पूछेंगे ना वो भी। पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं, इसमें डरने का नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। सो I'll say that I'm. My name is so and so. I'm born and raised here. Presently, I live here. I have so many people in my family. Um, Growing up, my all attention earlier used to be on learning. Now it is on career. So when it comes to career, I'm pursuing aviation. In aviation, I started with aircraft engineering to learn about aircraft and to see whether whatever reason was, you will say the truth there. And after I joined AME from here, this base, I really was very fascinated and I saw a very different approach to the aircraft industry operations. And I always knew that this information is good for me to know. Although I knew that I want to pursue after this, I want to go for flying. ऐसा बोलने का. So now I have started my uh, flight aspect of my aviation training, where I've started with my ground studies, and I've just recently started with my this subject and that subject. Today I'm here to help to try and clear RT. So I've been studying RT since 2 months, 3 months, 6 months, and with AME I have cleared so many modules, and I'm interested to do more, but I have planned everything strategically. So everything is going as per plan, and my plan is to finish my papers within 6 months overall with good knowledge so that I can start my flight training also. I want to fly for our country and I want to keep my aviation safe. So I'm trying to be the best pilot. ऐसे घुमा फिरा के बात करने का अच्छे से, जो ऑनेस्टली सच्ची है। आप लोग भी यही फील करोगे, और क्या ही फील करोगे। थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस होगी तो आप बोल सकते हो। फिर वो पूछेंगे एमए में क्या किया, कौन सा मॉड्यूल किया, क्या पढ़ा। जितना आता है उतना बोलने का, जितना नहीं आता है उतना बोल देने का नहीं आता। सर, मॉड्यूल्स तो यही यही किए हैं, बट मेमोरी फ्रेश नहीं है। आई माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही मैंने फोकस इस सब्जेक्ट पे किया है। बट या, क्विक 2 डे रिविजन विल हेल्प मी रिकॉल एवरीथिंग अगेन, ज़्यादा से ज़्यादा। समझो शबरीश मैं क्या बोल रहा हूँ। Confirm sir. तो डरो मत और झूठ मत बोलो। वो अगर बोलते हैं आपको तो यही नहीं आता, आपने एम कर लिया तो आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो फाइट, प्यार से हम्बली वहाँ पे फाइट करना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मे बी आई मेड मिस्टेक बट आई डू नो सर, एंड आई हैव स्टडीड वेल, आई हैव गिवन माई फुल टाइम, एंड मैंने पढ़ाई किया, मैंने टाइम पास नहीं किया है, एंड सब प्लान के हिसाब से किया है। इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कुछ नहीं है, डरने जैसा कुछ नहीं है, और सब कुछ ऑनेस्टली बोलना है। और इन दी एंड ये भी, बातों बातों में ये भी बोलना है कि आई एम फोकस्ड, आई बिलीव in accuracy of knowledge, accuracy of following instructions, doing the right thing, being focused, determined, trying to cover up my mistakes, not make mistakes, ऐसा सब। Keep healthy, sleep enough, ऐसा सब बीच बीच में ऐड करते रहने का। So they should get some
आइडिया दैट ओके जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर यंगस्टर है एंड अच्छा किया है इन्होंने, लेट्स पास देम, ये डिजर्व करते हैं कॉकपिट में जाना या जो भी आगे कर रहे हैं। तो डोंट वरी, ऑनेस्टली सब बोलना है। स्टार्ट विथ वेयर यू आर born एंड रेज्ड, देन से where you are, then say a little bit about your family, then say about your hobbies, and then talk about your career and talk about your present life, and you can talk about your next 2 year goal, 5 year goal also. Ki, sir, I have planned within 2 years I'll finish everything and start applying for jobs. So, but not without having proper knowledge of theory as well as flight training both. So I want to be the best student in every aspect so that I become a best pilot in every aspect. ऐसा सब वाइवा तुम्हारे स्टूडेंट बेस पे है, जॉब बेस पे नहीं है। ठीक है, पर्सनली हम काम करेंगे। आपका अच्छा था साहिल, अबाउट सेल्फ, कोई इशू नहीं है, फ्रीडम लेके आपने बोला। बर्थ प्लेस झारखंड में थी, फिर विरार में, तो विरार मुंबई बोलो, पूरा मुंबई भी बोलो आप, हर किसी को विरार पता नहीं होगा। कितने साल से मुंबई में हो वो बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। श्वेता समझ गए आप डाउट? ऑनेस्टली बोलना है, पाथ पूरा अपने अपनी हिस्ट्री देखनी है, और जो भी पहला एज दिख रहा है, 5 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, वहां से धीरे धीरे क्रोनोलॉजी में की इवेंट्स बताते शुरू करना है। सिंपल। फैमिली, हॉबीज, पढ़ाई के अलावा तो अभी ये बोलना है माई होल टाइम इज विथ माई फैमिली एंड माई करियर। विथ करियर आई हैव स्टडीज राइट नाउ। ऐसा, सो फैमिली और करियर आप बोलते हो बेस्ट रहता है। So in my family, I have parents, I have siblings. We go out for dinner, or we just spend time in the house, or we do cooking, or we help around, or I go around and run errands. सब शबरीश आप बोल सकते हो, आधे टाइम मैं अकेले रहता हूँ, आधे टाइम पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो आधे टाइम खुद का काम खुद करना पड़ता है। वो सब बीच में ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस अबाउट योर सेल्फ। समझ रहे हो? है ना? कोई मुझे पूछेगा तो मूड पे डिपेंड करेगा। अगर मैं नर्वस हूँ तो अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। और कोई बोलेगा नहीं नहीं, आपने ये क्यों नहीं किया, फिर आपने एएमई छोड़ दिया, कल सीपीएल छोड़ दोगे। तो बोले सर, छोड़ने के लिए एएमई नहीं किया था, मेरे को एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग समझनी थी, इसलिए मैंने पढ़ा था। जो मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गया हूँ। आई नेवर wanted to pursue a technician's job or an AME job, but I wanted to understand a technician's role and AME's role to become a better pilot, become a better aviation professional. Right now, I have no plans of going into AME, but in future, if it changes, then I will surely say. But right now, no. My job, my focus is to get a pilot's job only and pilot's license only. Everything else is for knowledge, and yeah, I want to study industry as a whole. इसलिए इंजीनियरिंग किया, ये किया, ऑपरेशंस कर लूंगा, एचआर कर लूंगा, मेडिकल कर लूंगा, सब पता कर लूंगा मैं आगे जाके, फिर खुद की एयरलाइन चालू कर लूंगा मैं। मजाक मजाक में बोल सकते हैं ऐसा। वो लोग भी करते हैं मजाक, ऐसा नहीं है नहीं करते, आप अच्छा करोगे तो। चलो, एनी मोर क्वेश्चंस? Negative, sir. Negative, sir. साहिल, एनी क्वेश्चंस? Negative. Negative, sir. एनी चैलेंजेस? नहीं सर, चलो, अभी सर। नहीं, चलो ठीक है। श्वेता एंड शबरीश, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। श्वेता, फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड कीप डिस्कसिंग। मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आपके, अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, पूछने पे भी मैसेज नहीं आ रहे, इसका मतलब आप सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ कंसर्न आ सकता है, इम्प्रूवमेंट नहीं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, फॉलो, एंड कुछ भी रहेगा मुझे बताओ। तो आदत डाल लो स्केड्यूल के हिसाब से, सुबह एक मैसेज, आफ्टरनून में एक मैसेज, और शाम को एक मैसेज। 3 अपडेट्स भी आप दे दोगे तो काफ़ी रहेगा। स्टार्ट अपडेट, ऑनगोइंग अपडेट, एंड अपडेट के हिसाब से भी। शबरीश एंड श्वेता, आपको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? Yes, sir. Affirm, चलो, sir. विल रैप अप फॉर नाउ, डोंट टेक टू मच प्रेशर, जस्ट लर्न। हर 2 घंटे में पूछो, कुछ और सीखा क्या, कुछ नया याद किया क्या, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं, व्हाट इफ सर ने मुझे ये पूछ लिया, क्या मैं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, तो चलो वो तैयारी करते हैं। बीच बीच में खुद को चेक करते रहो। साहिल, आप भी ये प्रैक्टिस करो, ठीक है? अपन ये सर। प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। एक दिन अभी बैठे हो, कुछ कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम पास कर रहे हो, तब व्हाट इफ सर ने मुझे ये पूछ लिया, तो इसका आंसर आता है, आता है, आता है, अच्छा इसका नहीं आता है, चलो ये मैंने लिख लिया, अभी मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। समझ रहे हो? दिस विल एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव एक्टिव रखेगा तुम्हारे माइंड को। शबरीश, फॉलो कर रहे हो ना?
तो सर यही पूरा टाइम आता, मतलब क्या पूछेंगे? हाँ, तो जो जो कॉन्फिडेंट है, जो जो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, वो टेक्स्ट पे रखो या मुझे टेक्स्ट कर दो, रिकॉर्ड में सेव्ड रहेगा। सर शेयरिंग जस्ट फॉर मेमोरी, ये टॉपिक्स मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, मेरे को ये बाद में पढ़ने हैं, मैं ऐसे रिकॉर्ड के लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको भी ध्यान रहेगा। वो भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, समझ गए? चलो साहिल, गुड No जॉब, problem. गुड जॉब। और मेहनत करनी है आज के दिन में, पूरी पूरी, रुकना नहीं है, ठीक है? No problem, sir. चलो स्टूडेंट्स, आई सी यू, आई टेल यू टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास। एंड देखेंगे दिन में होगा शाम में होगा, डिपेंड करता है बाकी लोग कब अवेलेबल होंगे। आई वांट एवरीबडी टू बी देयर। दैट बीइंग सेड, साहिल गुड जॉब, कीप इट अप, डोंट फॉरगेट एनीथिंग, कुछ भी रहेगा मुझे बताओ। श्वेता एंड शबरीश, गिव योर बेस्ट इन अ पॉजिटिव एंड अ हैप्पी वे। सिर्फ आटी, वन गोल, वन सक्सेस स्टोरी, आटी आटी आटी। फिलहाल शॉर्ट टर्म रखना है ये, और स्पेसिफिक रखना है, ओके? चलो, टेक केयर, आई विल सी यू, ओके? Thank you, Thank you. sir. मोस्ट वेलकम।